हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोरव सर क्लासेस। आज हम लोग टीआईएफआर 2026 का ट्रू फॉल्स सेक्शन, सर दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम ट्रू फॉल्स सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 13 को ट्राई करेंगे। सो स्टेटमेंट दिया गया है, सो हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ेगा इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। सो मेक द स्टेटमेंट फॉल्स, वी कैन टेक एन एग्जांपल। ओके, सो टेक, पहले देखें कि स्टेटमेंट क्या दिया गया है। सपोज फाइनाइट ग्रुप जी is the union of its silo subgroups. Okay, then the order of G is the power of some prime number. That means ये बोला गया है कि order of G is look like this. Okay, okay, take G equals to S3. S3 is a permutation group of three elements. The elements of S3 is written as 1 2 1 3 2 3 1 2 3 and 1 3 2. Okay, so and order of S3 is 6. That means 2 and 3. So it has two silos, two SSG, two second order silo subgroups, and three SSG order three silo subgroups. Okay, so uh, uh, that means E 1 comma 2, E 1 comma 3, E 2 comma 3 are the subgroups of 2 SSG H1, H2, and H3, and the 3 SSG is, suppose now name it at K. This is E 123 and 132. This is also a subgroup of G. So H1, H2, H3, K all are subgroup of G, and H1, H2, H3 are the 2 SSG. H1, H2, H3 are 2 SSG. SSG means silo subgroup, second order silo subgroup, and K is 3 SSG. That means third order silo subgroups, and totally G can be written as H1 union H2 union H3 union K. So G, here G is the union of its silo subgroups. All are silo subgroups. Okay, because order of H1 are prime, order of H2 are prime, H3 prime, K prime. So yes, we make a group with by taking the example of S3, this group G can be written as the union of its silo subgroups. ओके, ये स्टेटमेंट का ये पहला वाला पार्ट हम लोग एस्टेब्लिश कर लिए। देन बोला जा रहा है कि G is a power of some prime number. No, because here we see that order of G, that means order of S3 is 6, which is 2 into 3. Nothing, it is nothing of prime power. So this is not equals to p to the power n. This is not in the form of p to the power n as p is prime. So yes, we take a very good example and establish that statement is false. So the statement is false. So एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल से करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल टेक लेस टाइम। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन हैंडल करने का टाइम बहुत लेस करके लाएगा, बहुत कम कर देगा। सो इफ वी ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन विथ अ जनरल मेथड लाइक p to the power n is a PSSG union q to the power n, देन इससे भी, इस थ्योरम से भी, इस प्रोसेस से भी हो जाएगा, बट इट विल टेक वेरी मच टाइम। So that's why sometimes you have to take examples like this. Okay, so the statement is false. Thank you.